Shall we start? Yes, ma'am. So first rule that we will see, that is, the patient details the history of his sufferings. So just you have to do the imagination now, huh? He, the patient comes to you in your chamber, he sits there, and now he is giving the detailed history to you. So this scenario you should be keep into the mind up to the aphorism number 104. Clear? Clear? Yes, ma'am. So now you are taking the case. The general rules now we will discuss. Those about those about him tell what they heard his complaint of. So आपको पहली चीज क्या करनी है? You have to ask him what are your complaints और वो आपको सुनने हैं. But whenever you are listening to the symptoms of the patient, what things you have to follow, वो यहाँ पे उन्होंने दी है. हाउ ही वॉज बिहेव, फर्स्ट थिंग आपको उसको ऑब्जर्वेशन करना है कि हाउ ही इज बिहेविंग, whether he is a shy, whether he is a hypochondriac, whether he is giving the complaints by moving the hands, by eyes की movement, या कुछ itching हो रही है उसको. So all this behavior you have to observe it properly. What they have noticed in him, वो आपको किस तरह से देख रहा है, हाउ ही इज गिविंग द गेस्चर, वेदर ही इज जेन्युइन और नॉट. द फिजिशियन सीज, आप ये देखोगे, आप उसको अच्छे से सुनोगे, एंड रिमार्क बाय हिज अदर सेंसेस what there is of an altered or unusual character about him. So by your all the senses, by eyes, by nose, by ear, by touch, by using all your six senses, you have to observe the patient कि उसमें कुछ अनयूजुअल कैरेक्टर तो नहीं है, कुछ ऑल्टर्ड, कुछ अलग सा तो वो बिहेव नहीं कर रहा है. ही राइट डाउन एक्यूरेटली ऑल दैट द पेशेंट, जो पेशेंट बोल रहा है और आपको जो लग रहा है थोड़ा सा अनयूजुअल, आप उसको नोट करके रखो. आप यू कैन टेक द हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट, आप पेशेंट से ये सब बातें आप ले रहे हो, एज वेल एज फ्रॉम हिज फ्रेंड्स have told him in every expression used by him. जैसे वो बोल रहा है कि मुझे सुबह में उल्टी हुई थी एक बार, लेकिन उसके साथ अगर कोई फ्रेंड आया है या रिलेटिव आया है, वो बोलेगा कि नहीं, रात में हुई थी एक बार उसको, सुबह एक बार तो हुई है लेकिन रात में भी हुई है. So if any extra information they are giving, you can write it down. Keeping the silence himself, he allows him to say all they have to say. लेकिन उसको बीच में ही आपको इंटरप्ट नहीं करना है. आपको यहाँ पे क्या काम करना है? सिर्फ ऑब्जर्वेशन का एंड सुनने का, देखने का, एंड अगर काम पड़े तो ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखने का. यू शुड नॉट टॉक इन बिटवीन देम. आपको यहाँ पे चुपचाप बैठना है. एंड रिफ्रेन्स फ्रॉम इंटरप्टिंग देम. अगर आपने उसको इंटरप्ट किया तो वो ट्रैक छोड़ देगा. अनलेस दे वॉन्डर ऑफ द अदर मैटर, आपको वहां पे उसको इंटरप्ट नहीं करना है. व्हाट इज दिस रिफ्रेन? व्हाट इज दिस रिफ्रेन? आपको खुद को ही वहां पे स्टॉप करना है उसको इंटरप्ट करने से, सो दैट ही विल गिव यू ऑल द सिम्टम्स ऑफ हिज डिसीज. अगर आपको कब इंटरप्ट करना है उसको? अगर वो ट्रैक छोड़ के बात कर रहा है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द सिम्टम्स. अगर वो दूसरे पॉलिटिक्स में बात कर रहा है या दूसरे कोई खेल के बारे में बात कर रहा है, एट दैट टाइम ओनली यू हैव टू इंटरप्ट, अदरवाइज you should be in a quiet position. The physician advises them at the beginning of the examination to speak slowly in order that he may take down in writing the important parts of what the speakers say. तो आप उसको बोल सकते हो कि आप अपने सब कंप्लेंट्स आप बताइए, सो दैट आई विल राइट इट डाउन. तो वो धीरे धीरे आपको सब कंप्लेंट्स बताएगा. सो दिस इज द जनरल रूल. अब यहाँ पे आपको जनरल रूल कौन सा मिला है? यू शुड नॉट इंटरप्ट द पेशेंट. सेकेंड रूल आपको यहाँ पे क्या मिला है?
that you have to use your all the senses so that you will get any altered or the unusual character if it is present in the patient. थर्ड इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे क्या मिली है कि whenever the patient is wandering off the matter, then only you have to interrupt. And fourth thing is that you have to write down all the symptoms that the patient is giving. So for that, you can ask the patient to speak slowly or give some the proper way so that you can write it down. So these four things or the four general rules are explained here by Dr. Henneman for the case taking. Clear? Yes, ma'am. कोणी सांगेल? कोणी सांगेल का? कोणते रूल्स फॉलो करायचे आहेत? मॅम सांगू मी? सांग. First point is you should not interrupt them. Second is we have to use all our senses. Third is when patient is wandering off to the other matters, then only we can interrupt them. And fourth is extra information. Patient अगर दे रहा है तो अपन लिख सकते हैं. बरोबर. We can write. Yes, right. Everyone understood what we have to follow? Yes, ma'am. Now the footnote. Every interruption breaks the train. हमको interrupt क्यों नहीं करना है? The reason is also given. कि every interruption breaks the train of thought of the narrator. If he is talking about anything, modality suppose, and if you ask, अच्छा दोपहर में नहीं होता है क्या? So there will be the thought जो उसकी process है वो break हो जाएगी. So let him speak. You will also get the time कि जब आप उसको पूछना है आपको. So it will be harmful to the patient. अगर उसका thought process अगर break होगी तो मे बी आपको peculiar symptom वहाँ पे नहीं मिलेगा. And all would have said at the first does and at the first does not again occur to them in the precisely the same manner after that. आपला पण असंच होतं की whenever you are talking something, you are having some thoughts in your mind, and if somebody interrupt, then you will not be able to explain that more precisely as you think before. And the same thing can be happen with the patient, and hence we should not interrupt. So this is the reason, because the thought process will break and he will not be able to explain again the same point more precisely as he want to do in the beforehand. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the aphorism number 85. Read. Who will read aphorism 85? Ma'am, can I? Read. He begins a fresh line with every new circumstance mentioned by patient or his friends, so that the symptoms shall be all read separately one below the other. He can thus add to any one that may at first have been related into vague a manner, but subsequently more explicitly explain. Explicitly explain. Okay, thank you. So here he has again given the next instruction that the physician should follow. ये तो आपको समझ में आया होगा. यहाँ पे क्या बताया है आप भी मुझे बोलो. इतना सिंपल इसमें दिया है कि the physician should write down every new circumstances, every new symptom from the fresh line, so that वहां पे confusion नहीं होगा. Explicitly means there should not be any confusion, there should not be any doubt. So the physician must begins a fresh line for every new symptom or for every new circumstance mentioned by the patient or his friend. जैसे हमने पहले भी कहा था कि if the his friends or relatives और जो भी उसके साथ आए हैं अगर वो एक्स्ट्रा कुछ बता रहे हैं तो we have to note it down. Suppose he is telling that he is having the running nose since 2 days, so you have to, and after that he says that I am also having a cough, या फिर उसके friend ने बताया कि he is also having a cough, dry cough, इसको खांसी आती है. So the cough and the coryza symptoms should be mentioned from the fresh line.
वहां पे आपको कॉमा देके या फुल स्टॉप देके वही लाइन आपको कंटिन्यू नहीं करनी है. So that the symptoms shall be arranged separately one below another. So पहले आपने running nose का point लिखा and then fresh line से आपने उसको cough का point लिखा. He can thus add to anyone that may at the first have been related to vague manner but subsequently more explainedly explain. So भले ही अभी वो बहुत वेगली दे रहा है क्योंकि आपने उसको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछे है तो वो वेगली आपको दे रहा है, but subsequently there will not be any confusion. Explicitly means there should not be any confusion, there should not be any doubt when he will explain it. That vague symptom जो है उसके उसमें भी आपको डाउट नहीं रहेगा when he will give the explanation. Clear? तो यहाँ पे कौन सा रूल दिया है? We have to write down all the symptoms from the fresh line. वहीं पे बाजू में आपको नहीं लिखना है. Clear? Yes, ma'am. Now the aphorism number 86. Who will read? So these are all the do's of case taking. You should be prejudiced. You should be in a quiet position. You should take the note of all altered or unusual character of the patient. Then you should advise the patient to speak slowly so that and clearly so that you can write down all the symptoms. That you have to begin all the symptoms from the fresh line. So these are all the do's of case taking. आपको ऐसा भी क्वेश्चन आता है, do's and don'ts of case taking. So 5 do's we have seen. Who will read this aphorism 86? And one don't also we have seen. You do not interrupt the patient. Can I? When the narrator have finished what they would say of their own accord, the physician then reverts to each particular symptom and elicits more precious information respecting it in the following manner. He reads over the symptoms as they were related to him one by one, and about each of them he inquires for further particulars. Example, at what period did these symptoms occur? What it was it previous to taking the medicine he had hitherto been using, while taking the medicine, or only some days after leaving of the medicine? What kind of pain, what sensation exactly, what it was it that occurred on this spot? Where was the precise spot? Did the pain occur in fits and by itself at various times, or was it continued without intermission? How long did it last? At what time of the day or night? And in what position of the body was it worse or ceased entirely? What was the exact nature of this or that event or circumstances mentioned, described in plain words? Okay, thank you, Aisha. So, Alicia, here, ma'am. Alicia, sorry. So here, मैम what happened? मैम 10 को HMM का लेक्चर है. हाँ, अभी कितने बजे है? 2 मिनट है ना बेटा? Yes मैम. So if you want, you can leave. I will not say anything because मुझे 4 मिनट और complete करने हैं for that 1 hour. So you can leave and you can listen it from YouTube. If you want to do something for the next 1 hour, खाना है या कुछ भी अगर दूसरा कुछ काम करना है आपको तो you can leave because immediately at 10 o'clock you are having a lecture. I can understand. So you can leave and you can again hear all these things through the link. No problem. Who will take the attendance today as Deepak is absent? Who will take? Arey, nobody is willing to take the attendance. Ma'am, I will take. Okay, so write it down. You take the screenshot now, and if you want, you can leave the meeting and post it me afterward on the group. Okay. Second thing is that today you are having a homework.
प्लीज राइट डाउन डोज एंड डोंट्स ऑफ केस टेकिंग, जो हमने ये 2 एफोरिज्म्स में किए हैं, बिकॉज उसमें अभी ऐड होते जाएंगे पॉइंट्स, सो बेटर अभी से ही स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जैसे जैसे एफोरिज्म्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप उसमें ऐड कर सकते हो। क्लियर? सो आज हमने Yes, 4 ma'am. डूज एंड 1 डोंट ऑफ केस टेकिंग देखे हैं। सो प्लीज राइट इट डाउन एंड पोस्ट इट टू मी। क्लियर? Yes, ma'am. एक कॉलम बनाओ, एक साइड में लिखो डूज एंड एक साइड में लिखो डोंट्स, और ऊपर हेडिंग दो फ्रॉम एफोरिज्म नंबर 83 to 104 एंड केस टेकिंग, ऐसे हेडिंग देके राइट डाउन द 2 थिंग्स। ओके, now the aphorism 86. If you want, you can leave because only 2 minutes are left to complete my 1 hour. So you can left for your HMM. When the narrator have finished what they would to say of their own accord, here the narrator means the patient. When the patient is finish it off, the physician can revert to each particular symptom. Revert यानी फिर से पीछे जाना. So आप फिर से पीछे जाके you can ask for कोराइजा के लिए, कफ के लिए, फीवर के लिए. Again you can ask about each and every symptom. Elicits more precise information. So elicit means you are taking the more precise information from that respective symptom in the following manner. कैसे लेना है आपको? He reads over the symptom as they were related to him one by one. So आप फिर से वापस जाके आप उसको पूछोगे कि ठीक है कोराइजा कितने दिनों से है, या फिर अब ये नीचे के क्वेश्चन नाउ वी विल आस्क कि व्हाट पीरियड डू यू हैव अ सिम्टम, व्हाट प्रीवियस यू आर टेकिंग, आपने कोई मेडिसिन ली है क्या उसमें, विच मेडिसिन यू हैव टुक, ओनली सम डेज आफ्टर लिविंग ऑफ दिस मेडिसिन, वो उसने कहा कि मेडिसिन मैंने ली है तो कितने दिन पहले ली है, कितने दिनों के लिए वो मेडिसिन ली है, अब कितने दिन हो गए वो मेडिसिन छोड़ के, ये सब पॉइंट्स, ये सब क्वेश्चंस आप उसको पूछ सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ पेन, अगर वो बोलता है कि मुझे पेन है, सो व्हाट इज अ काइंड, सेंसेशन क्या है उसमें, आप वहाँ पे पर्टिकुलर एनाटॉमिक स्पॉट उसको पूछ सकते हो। वेयर वॉज द प्रिसाइज स्पॉट, डिड द पेन अकर इन फिट्स इटसेल्फ और वेरियस टाइम, पेन के बारे में आप उसको आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगे, और इट वॉज कंटिन्यूड विदाउट और इंटरमिशन, कंटिन्यू पेन है, विच टाइप ऑफ पेन, कंटिन्यूस है या इंटरमिटेंट पेन है, कब तक वो पेन रहता है। फॉर द मोडालिटी यू कैन आस्क द टाइम मोडालिटी कि कौन से टाइम में, डे में, नाइट में वो रहता है, डे में है तो कब रहता है। पोजीशन मोडालिटी आप यहाँ पे उसको ले सकते हो, एंड एग्जैक्ट नेचर ऑफ ऑल दिस सर्कमस्टांसेस, यानी ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स के आप एग्जैक्ट नेचर ले सकते हो in your plain words. So again we will discuss this aphorism tomorrow because lot many of things that I have to explain regarding this aphorism 86, but now the time is over. So again we will discuss this aphorism 86 and we will take the further aphorisms again tomorrow. Okay, any doubt in this? No, ma'am. All the things are clear? Yes, ma'am. Okay, so this Yes, is for ma'am. homework. You write down the do's and don'ts of case taking. Okay, now you can leave for your mathematical class. Bye bye. Yes, ma'am. Bye, ma'am. Start.